every breath transcend time and space. Move beyond shape and form. Experience the union of duality, the union of polarity. Experience the state of oneness, the state of non-duality. बोन कितनी बोन्स होती है उसने बताया, ठीक है ना, बैकबोन, स्पाइन, रिब्स, लिम्ब, ठीक है। With every breath, connect to this eternal now. Connect to this absolute. Surrender to this field, to this glory. With every breath, join this ocean of light. With every breath, align your vibrational frequency with this invincible field, with this mystic field.
गुड मॉर्निंग। मेरा और एक दो आज है पर कोई आ नहीं रहा अभी तक, थोड़ा लेट आएंगे वो लोग। Good आई morning, थिंक sir. वी शुड स्टार्ट। इफ समबडी कैन रीड, आई वुड लाइक टू स्टार्ट। नहीं तो क्या रोज है ना, अपन भाग दौड़ करते हैं, मजा आता है। मंजी जी, अखिलेश कोई पढ़ेगा? यस मंजी। हेलो। Good morning. गुड मॉर्निंग। कैन यू रीड फॉर मी Yeah, sure. प्लीज? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे पर एक मिनट, शेयर नहीं हुआ मेरा। एक मिनट शेयर करता हूँ। मैंने खोला हुआ, शेयर नहीं किया। एक सेकंड है। कल हमने क्या था, ये वाला सोशल क्या था, मिरर। ये डिफाइंड, मतलब कि हम लोग कैसे बनते हैं सोसाइटी से, क्या हमको वो होता है, हाउ आर वी मेड, हाउ आर वी, क्या होता है इसको, हमारे पे क्या एक्शन होता है, हाउ डज सोसाइटी एक्शन, नहीं क्या तो उससे हम बनते हैं ना। क्या वर्ड याद नहीं आता मेरे को। कई बार वर्डिंग्स में ऐसा होता है ना, मतलब आई कैन, प्रभाव, सोसाइटी का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो 3 वेज, एक जेनेटिक, बाप दादा, माँ बाप, एक होता है एनवायरमेंट से, और एक होता है साइकिक। माँ बाप से गुण आए हमारे में, किसी ने क्या बोला बचपन में, और लगभग ना आप जब तक होते हो 5 साल के, वो टाइम जो बोलता है वो एकदम ग्रहण कर जाता है, आपको दिमाग में बैठ जाता है। ऐसा कुछ खतरा कुछ बोला है, कुछ जोर से बोला है 5 साल के आसपास, दिमाग में बैठ जाता है। तो साइकिक, यू आर डिटरमाइंड बाय योर साइकिक, योर जेनेटिक्स, एंड बाय एनवायरमेंट। आपका एनवायरमेंट, कहाँ रहते हो आप, उधर क्या माहौल है, उस पर डिपेंड होता है। तो ये हमने छोटा मोटा किया था कल लास्ट टाइम। डिटर्मिनिस्टिक पैराडाइम, मतलब हमारा बिलीफ कहां से बनता है, इस तरह से बनता है। तो टुडे वी आर गोइंग फॉर द प्रोएक्टिविटी डिफाइंड। हरे कृष्ण जी, गुड मॉर्निंग। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग सर। Hirani आई sir. होप यू आर ऑल रीडिंग द समरी दैट आई सेड। मैं रोज समरी भेजता हूँ, आज मैंने कल की, आज विजिबल से कल रह गया था मेरा, तो सुबह सुबह बनाया मैंने। आई होप यू आर रीडिंग द समरी। कल कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने आज भेजा है। ओके, लेट्स गो। हिरानी सर, मेरा बेटा 7th में है, 6th में है, और वो मेरा बेटा 6th में है, ही इज विद मी, वो पढ़ेगा, ठीक है? ओके, अरे वाह, वेरी गुड। Can you start? नाम क्या उनका? हिज नेम इज वंश। वंश, वाह। हाय जतिन, गुड मॉर्निंग। या बस Good बेटा morning, पढ़िए। sir. गुड मॉर्निंग In, बेटा। in discovering the basic principle of the nature of man, Frankl described an accurate self-map from which he began to develop the first and the most basic habit of a highly effective person in any environment, the habit of proactivity. एक्टिविटी। Proactivity. While the word proactivity is now fairly common in management literature, it is a word you wouldn't in most dis- Dictionary. dictionaries. It Yes. means more than merely taking initiative. Initiative बेटा। Yes, very good, very Initiative. nice. It means that as human beings, we are responsible for our own lives. Our behavior is a function of our decisions, not our conditions. दूर से पढ़ो ना। Condition. We can sub- Subordinate.
subordinate feelings to values. We have the initiative and the responsibility to make these Make things things happen. happen. Great, very nice, beta, very nice. तो सिक्स्थ में and you are reading so nicely. I am really proud of you. Very nice. Thank you, sir. एक मिनट बेटा, एक मिनट, अभी हम लोग समझ लेते हैं. In describing this basic principle, ये नेचर ऑफ मैन, आदमी का जो नेचर है उसको समझने में द बेसिक प्रिंसिपल फ्रेंकल हैज डिस्क्राइब्ड. फ्रेंकल जो आदमी था, विक्टर फ्रेंकल, ही हैज डिस्क्राइब्ड एन एक्यूरेट सेल्फ मैप which he began to develop the first and most basic habit. उन्होंने एकदम अपना एक्यूरेट सेल्फ में बनाया, उसमें उन्होंने पहली हैबिट को उन्होंने उजागर किया. द फर्स्ट हैबिट वाज व्हाट? बीइंग प्रोएक्टिव. हैबिट ऑफ प्रोएक्टिव. ये प्रोएक्टिव इतना कॉमन वर्ड हो गया है, फिर भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा. इट इज मैनेजमेंट में बहुत ही ये हो गया है, फिर मतलब मोस्ट ऑफ डिक्शनरी में वो नहीं मिलता वर्ड. हालांकि अभी आ भी होगा. वो बोलते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल अपनी लाइफ के लिए. हमारी लाइफ के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है. और हमारा बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ डिसीजन. हमारी जो कंडीशन है उससे नहीं होता है. देयर कुड बी एनी कंडीशन, एनी एनवायरमेंट, एनी जेनेटिक कंडीशन, बट हाउ यू, व्हाट यू बिलीव एंड हाउ यू थिंक अबाउट इट, वो आपके ऊपर है. तो आपका बिहेवियर, आपके डिसीजन, आपने क्या डिसाइड किया. आपके एनवायरमेंट में सब चोर है, मगर आपने नक्की किया मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे ऑनेस्ट बनना है. दैट इज योर डिसीजन, राइट? तो इट कैन बी पॉसिबल दैट यू डिसाइड समथिंग. एनवायरमेंट कुछ भी हो, तो आपका जो बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन एंड नॉट ऑन द कंडीशन. वी कैन सबऑर्डिनेट फीलिंग टू वैल्यूज. हमारी जो फीलिंग है वैल्यूज से सबऑर्डिनेट कर सकते हैं. वी हैव द इनिशिएटिव एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस हैपन. हमारी ये इनिशिएटिव होनी चाहिए टू स्टार्ट, एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस थिंग्स हैपन. इन्होंने एक पिक्चर दिया मस्त. फ्रीडम टू चूज. वी ऑल हैव फ्रीडम. वन समझ रहे हैं बेटा तेरे को? Once, are you understanding what I'm saying? Yes, sir. Very good. Thank you, beta. So, freedom to choose. We have a freedom to make a choice. There is some stimulus. मतलब कुछ हो रहा है. किसी ने आपको, आपसे मस्ती की है, किसी ने कुछ बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, जो भी है. There is stimulus. And then we respond. तो हमारे पास freedom क्या? After stimulus, we can be self-aware. We can have imagination of something. कि ऐसा क्या तो ऐसा होगा. We have conscience. हमारे अंदर का एक conscience होता है. एंड हमारा इंडिपेंडेंट विल होता है, हमारी मर्जी होगा ना, हमारी मर्जी. सो वी हैव इंडिपेंडेंट विल. तो हम एक ह्यूमन बीइंग है जिसको ये ताकत है कि वी कैन बिकम सेल्फ अवेयर. वी कैन थिंक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट शुड हैपन, एंड ऑल दिस थिंग्स. जब एनिमल्स दे ओनली लिव बाय इंस्टिंक्ट. इंस्टिंक्ट इज व्हाट? जो नेचर हमारे बॉडी पे दिया गया है. मतलब वो भूख लगी, खाना बैठेगा. हम लोग भूख को सहन भी कर सकते हैं, हम लेट खाएंगे. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर सेल्फ अवेयर. वो एनिमल्स में नहीं होता है. उनको नहीं खाना मिला, नहीं मिलेगा तो अलग बात है. बाकी जब होगा खाना खा लेंगे, फिर वो सो जाएंगे. दे वर्क विद इंस्टिंक्ट. उनको आपने पत्थर से दिखा तो वो भाग जाएंगे. तो दे ओनली हैव इंस्टिंक्ट. दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड. दे ओनली हैव रिएक्शन. बट वी हैव सेल्फ अवेयरनेस. वी कैन डू आल्सो इमेजिनेशन. हमारा कॉन्शियस बाइट करता है, हमारा कॉन्शियस के अंदर, और हमारा इंडिपेंडेंट विल है. तो दिस इज प्रोएक्टिव मॉडल. How you make productive, how you become productive? By self awareness, by imagination. हम फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं कि हमको ये चाहिए और ये होने वाला है. And we can live that future today by imagining it and bring the feeling out for that. Then there is conscience. हमारे अंदर एक conscience होता है जिससे हम सोचते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है. और फिर हमारा will है, we decide what to do. We have a will to choose something. Yes, बेटा, let's go ahead. Once. Once. Yes, sir. Read it. Go ahead. Okay, sir. Look at the word responsibility. Responsibility, Ability. ability, the ability to choose your response. Highly proactive people recognize that responsibility. They do not blame circumstances, Circumstances. Yes. circumstances, conditions, or conditioning for their behavior. For the behavior. They, Great.
their behavior is a product of their own conscious choice, based on values rather than a Product product of of their their condition. conditions, based on feelings. Feeling. Because we are by nature proactive, if our lives are a function of conditioning and conditions, it is because we have by consequence decision or by default chosen to empower those things to control us. Yes. In making such a choice, we became reactive. Reactive people are often affected by their physical environment. If the weather is good, they feel good. If isn't, it affects their attitude and Attitude. their performance. Proactive people can carry their own weather with them. Whether it rains or shines make no difference to them. They are value driven, and if their value is to produce good quality work, it isn't a function of whether the weather is conducive to Or it it, or it not. or not. Yes. एक मिनट. So look at the word responsibility. Responsibility का मतलब क्या होता है? Response का ability. We should be able to respond. जो बहुत प्रोएक्टिव आदमी होते हैं वो हमेशा थोड़ा कॉन्शियसली छोड़ के अपना रिस्पॉन्ड करते हैं, बिकॉज वी आर बाय नेचर प्रोएक्टिव, हम ऑलरेडी प्रोएक्टिव है, और हम जो कंडीशनिंग जो है हमारा या जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोग जवाब देते हैं, तो इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट, ये हमने डिसाइड किया कि आई विल डू दैट वे, वी कुड चेंज द डिसीजन, इसीलिए हम रिएक्टिव बन गए, किसी ने कुछ चिढ़ाया कुछ बोला हम फटाक से गुस्सा कर लेते हैं, व्हाई दैट? बिकॉज वी आर बीइंग ड्रिवन बाय द कंडीशंस, प्रोएक्टिव तो है मगर बाय कंडीशन, तो वी आर रिएक्टिव मोर. तो प्रोएक्टिव पीपल कैन कैरी देयर ओन वेदर विद देम. वेदर कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, सनशाइन है बारिश है क्या है, एक प्रोएक्टिव आदमी को फर्क नहीं पड़ता है, ही कैरी ऑन वेदर, फिर दिमाग में होता है जो भी होगा मैं उसको सहन करूंगा, आई विल डू व्हाट एवर आई वांट. सो वेदर इट रेन्स और साइंस मेक नो डिफरेंस टू देम, दे आर वैल्यू ड्रिवन. जो आदमी प्रोएक्टिव होता है, एक होता है रिएक्टिव, सॉरी प्रोएक्टिव मतलब रिस्पॉन्ड वाला, मैंने आगे अलग बोल दिया. तो ये जो होते हैं प्रोएक्टिव, दे आर वैल्यू ड्रिवन, दे आर नॉट ड्रिवन बाय द फीलिंग्स, दे आर नॉट ड्रिवन बाय द कंडीशन. उनका एक वैल्यू है, मुझे यही करना है, ऐसे ही करना है, आई वांट टू बी ऑनेस्ट, आई वांट टू बी मैन ऑफ इंटेग्रिटी. तो ये उनके वैल्यू इनको ड्राइव करते हैं. सो इट्स अ फंक्शन ऑफ वेदर, द वेदर इज कंडीसिव और नॉट, अच्छा कंडीशन है वेदर का या बुरा है, दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू, वो कभी कंडीशन से ड्राइव होते हैं. यस बेटा, वंस गो अहेड. रिएक्टिव पीपल Okay, sir. आर Um, Sir, reactive people. reactive people are also affected by their social environment, by the social weather. When people treat them well, they feel well. When people don't, they become defensive or protective. or protective. Reactive people build their emotional life around their behaviors or others, improving the weakness of other people to control them. The ability to subordinate an impulse to a value is the essence of the proactive person. Reactive person are driven by feelings, by circumstances, circumstances. No, 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 no. by My conditions, condition. by their environment. Proactive people are driven by values, carefully thought about, selected, and internalized values. Values. रुको आगे. Good, good, नहीं. Productive people आगे आगे. Proactive people are still influenced by the external stimuli, whether physical, social, or philosophical, Psychological. Psychology. PS है but, ना, psychology. but their response to the stimuli, conscious or unconscious, is a value based
choice or response. और रिस्पॉन्स, हाँ एक मिनट, एज एलिनोर, लेट्स गो अहेड. हेलो. As As Eleanor Eleanor Roosevelt observed, observed, no one can hurt you without your Consent. consent. In the हाँ, words of Gandhi, they cannot take away our self-respect if we do not give it to them. then It is our willing permission or consent to what happens to us that hurts us far more than what happens to us in first in first place. place, हाँ, I admit this is very hard to accept emotionally, especially if we have had years and years of yes, explaining our misery in the name of circumstance or someone else's behavior. But until a person can say deeply and honestly, I am what I am today because of the choices I made I made yesterday, and the yesterday. person cannot say, I choose I otherwise. choose otherwise. Yes. एक मिनट. अभी रिएक्टिव पीपल कौन होते हैं? रिएक्टिव पीपल वो होते हैं जो उसको सोसाइटी या सोशल एनवायरनमेंट, आपका जो साथ, जो जहां पर आप रहते हो, वो इफेक्ट करता है. ही इज रिएक्टिव. वो एज पर कंडीशन वो रिएक्ट करता है. व्हेन पीपल ट्रीट देम वेल, दे फील वेल. जब कोई खराब बिहेव करता है, वो खराब करता है. तो रिएक्टिव पीपल बिल्ड देयर इमोशनल लाइव्स अराउंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स. बाकी लोग कैसे बिहेव करते हैं, उसके इर्द गिर्द उनका इमोशनल लाइफ चलता है. सो व्हाट दे डू, दे एम्पावर द वीकनेस ऑफ अदर पीपल टू कंट्रोल देम. एक आदमी कमजोरी को, उसकी कमजोरी को वो इतना एम्पावर करता है कि दैट कमजोरी, दूसरे आदमी की कमजोरी इनको कंट्रोल करता है. दे आर रिएक्टिव, तो दूसरे आदमी का वीकनेस भी है ना, वो भी इनको कंट्रोल करता है. सो द एबिलिटी टू सबऑर्डिनेट इंपल्स टू वैल्यू. एक इंपल्स मतलब इंस्टिंक्ट, एक फीलिंग आती है, फटाक से कुछ इंपल्सिव होता है आदमी. टू द एबिलिटी टू सबऑर्डिनेट इंपल्स को वैल्यू से is the essence of proactive person. Reactive is impulsive, instinct, and proactive is value based. तो impulse से value में कैसे convert करते हैं? तो in essence of proactive person, reactive people are driven by feeling, by circumstances, by conditions, by the environment. तो ये जो reactive होते हैं, वो इस सब चीजें कंट्रोल होते हैं. फीलिंग कैसी है, सर्कमस्टेंस कैसा है, कंडीशन कैसी है, and all these things. प्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव पीपल आर ड्रिवन बाय वैल्यूज. उनकी जो वैल्यूज होती है कि मुझे यही करना है, ऐसे ही करना है, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट ओनली, तो उनकी वैल्यूज ड्राइव करता है. उनकी एक्शन कैसे होगी, बेस्ड ऑन द वैल्यूज. तो केयरफुली थॉट अबाउट सिलेक्टेड एंड इंटरनल वैल्यू. तो आपको एक जो बहुत समझ के हमने सोच के रखा है और अंदर घुसा है हमने अमुक वैल्यूज को अपने लाइफ में, उसी के बेस पर वो आदमी डिसीजन लेगा प्रोएक्टिव. तो प्रोएक्टिव पीपल आर स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस. वो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजी जो भी हो, वो भी बाहर की जो ताकत है उससे प्रभावित होता है. बट द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली कहीं, बट द रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जो स्टिमुलस आता है उसको जो रिस्पॉन्स होता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इज अ वैल्यू बेस्ड चॉइस और रिस्पॉन्स. उनका रिस्पॉन्स वैल्यू बेस्ड होगा. ऐसे नहीं होगा, कंडीशन क्या है उससे नहीं होता है. ही हैज टू अंडरस्टैंड, फील फ्रॉम इनसाइड दैट इट इज राइट थिंग टू डू, तो वो कर पाएगा. अभी लिखा है एज एलिनियर रूजवेल्ट ऑब्जर्व्ड, नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट. कोई आदमी आपको हर्ट नहीं कर सकता है जबकि आप उसको कंसेंट है. इट यू डोंट अलाउ हिम, नोबडी कैन हर्ट यू. इन द वर्ड्स ऑफ गांधी, दे कैन नॉट टेक अवे योर सेल्फ रिस्पेक्ट. वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर नहीं जा सकते इफ यू डोंट गिव. इतने उनके फादर रहते हैं घर लेके, तो इट इज आवर विलिंग परमिशन और कंसेंट टू व्हाट हैपेंस टू अस दैट हर्ट अस फार मोर. ये हमारा एक परमिशन है, हमारा कंसेंट है टू व्हाट इज हैपेंड, और वो चीज ज्यादा हर्ट करती है. जो हुआ उससे इतना हर्ट हुआ जितना हमने वो कंसेंट दे दिया, उसको मान लिया और अपने दिमाग में बिठा दिया, उससे ज्यादा तकलीफ होती है. आई एडमिट दिस इज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट इमोशनली. इमोशनली हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. हाउ कैन somebody rule me? Especially we have had years and years of explaining our misery
in name of circumstances or someone else's behavior. But until a person can say deeply and honestly, I'm what I am today because of choices I made yesterday, then present cannot say I choose otherwise. पर्सन में तो मैंने चूज किया है तो वो बोलता है आई एडमिट दैट these people are driven by some reaction by the conditions and all these things but until a person can deeply say deeply and honestly I am what I am today because of choice तो मैं आज जो भी हूँ हमको समझना पड़ेगा कि मैं जो भी हूँ आज जैसा भी हूँ इट इज बिकॉज चॉइसेस आई मेड ये हमारी चॉइस थी कि हम रिएक्टिव बनेंगे किसी ने बनाया नहीं है हमको वो डिसीजन चेंज करना है तो आई एम व्हाट आई एम टुडे बिकॉज ऑफ द चॉइसेस आई मेड यस्टरडे A person cannot say I choose otherwise. वो नहीं बोल सकता कि मैं अलग कुछ चूज किया है. He is what he has chosen. और वही उनको मिला है. Yes. आप पढ़ो आगे बढ़ा बेटा. Once in a Okay, sir. Once in Sacramento, when I was speaking on the subject of proactivity, a woman in the audience stood up in the middle of the presentation and started talking excitedly. It was a large audience, and as a number of people turned to look at her, she suddenly became aware of what she was doing, grew embarrassed, and sat back down. Suddenly, he he suddenly became aware of sat back down, but she seemed to find it difficult to restrain herself and started talking to the people people around her. her. She seemed so happy. I could hardly wait for a break to find out what had happened. When it finally came, I immediately went to her Immediately. and asked if she would be willing to share her experience. You just can't imagine what happened to me, To me. she exclaimed. I am a full time nurse to the most miserable, ungrateful man you can possibly imagine. Nothing I do is good enough for him. He never expresses appreciation and hardly even acknowledges me. He constantly laughs at me and finds And fault find fault everything. with Yes. everything I do. Do. This man had made my life miserable, and I often take my frustration out on my family. The other nurses feel the same way. We all must pray for this demise, His demise. and for you to have the gall to stand up there and suggest that nothing can hurt me, that no one can hurt me without my constant and consent, and that I have chosen my own emotional life of being miserable. Well, there was just no way I could butt into that. But I kept thinking about Thinking about it. it I really went inside inside myself myself and began to ask, do I have the power of choose to my choose my response? When I finally realized that I do have that power, when I swallowed the bitter pill and realized that I had chosen to be miserable, I had also realized that I could choose not to be miserable. At the miserable. moment I stood up, I It felt felt as though though I was was being being let let out out of of San San Quinto. Quentin. I I wanted wanted to to yell yell to to the the whole whole world, world, I I am am free. free. I I am am let let out out of of prison. prison. No No longer longer am am I I going to to be be controlled controlled by by the the treatment treatment of of some some person. person. Yes. एक मिनट आज शुरू किया था हमने one in Sacramento when I was speaking on the subject of proactivity.
एक लड़की, एक औरत खड़ी हुई, and in the middle of my presentation started talking excitedly. She suddenly became aware of what she was doing. She grew embarrassed and sat back down. But she seemed to find it difficult to restrain. वो अपने को रोक नहीं पाई. And started talking to people around her. She seemed so happy. इतने खुश लग रही थी वो. I could hardly wait for a break to find out. मतलब मैं वो जो ये जो ऑथर है बोलता है I could hardly wait कि कब ब्रेक और मैं उसको बुलाऊं और उससे बात करूं. I immediately went to her and asked if she would be willing to share her experience. तो वो बोलते हैं यू कैन नॉट इमेजिन कैसा आदमी. आई एम नर्स. मेरे को एक ऐसा दर्दी मिला है जो आदमी कभी खुश हो ही नहीं सकता है. मैं कितना भी करूं वो दुखी ही रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ भूल निकालेगा. हमेशा गोइंग टू हार्ट दैट तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया. हमेशा वो एक ना कुछ भूल निकालेगा. वो कभी खुश हो ही नहीं सकता है. एंड फॉर यू टू हैव अ गोल टू स्टैंड अप there and suggest that nothing can hurt me, that no one can hurt me without any my consent, and that I choose my own emotional life of being miserable. Well, there was just no way I could buy into that. मतलब मैं समझ ही सकती हूँ. आप बोलते हो कि nobody can hurt you without your consent. ये इसको मान लगे वो आदमी इतना बुरा था. मुझे वो मैं नर्स थी उधर और ये मुझे सहन करना पड़ा. And I was really hurt. But I kept thinking about it. बाद में उन्होंने बोला कि मैं सोचती रही. तो आपने क्या बोला? फिर मैं अंदर गई, दिल से सोचा, and begin to ask, do I have power to choose my response? I'm sorry. उन्होंने पहले बोला ये मैं मान सकती नहीं कि तुम बोलते हो तुम चूज करते हो. फिर मैंने अपने अंदर झांका. I went internal. I tried to find the solution. I raised question to myself. Do I have power to choose my response? तब उन्होंने एक रियलाइज किया कि जब वो कुछ भी होता है, if the वो जो मिजरेबल फील है वो हम ले लेते हैं. That I had chosen to be miserable. तो मैंने वो चूज किया कि मैं मिजरेबल होंगे, नहीं तो मुझे लेने की जरूरत नहीं थी. वो बोलता है उसका काम है, मुझे जरूरत नहीं डिस्टर्ब होने का. आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई कुड चूज नॉट टू बी मिजरेबल, कि मुझे मिजरेबल नहीं होना है. आई कैन चूज इट, पर मैंने चॉइस नहीं किया. तो क्या दिखा रहे हो आपस ऑथर कि यू कैन नॉट, नोबडी कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट. समवेयर यू गिव दैट कंसेंट टू हिम. वो आदमी कितना ही बेकार होगा, मगर वो आपको जब कुछ बोलता है, यू कैन आइदर से दिस इज थैंक यू सर. मतलब उनको नहीं बोलना है, एक मन में मुझे नहीं चाहिए आपकी गाली, आप अपने पास रखिए. तो उसके पास ही रह जाएगी. जो आदमी बोलता है उसके मुंह से गंदी गंदी निकलती बातें, तो वही दुखी होता है. जो हम चूज करें कि हमको दुखी नहीं होना है कि उसने बोला ना, मैंने तो बोला नहीं है, इसकी मर्जी जो बोले. दैट डजंट मीन कोई मुझे गधा बोलेगा मैं गधा तो नहीं बन जाऊंगा, मगर जो मैंने रिएक्ट किया तो मैं गधा बन गया. क्यों? क्योंकि गधा बेवकूफी करता है. और मैं भी जो रिएक्ट करूं और बेवकूफी की बात करूं तो मैं गधा हो गया. बट इफ आई कीप काम और मैं वो गधा बोला बोला उसकी मर्जी, और कुछ जवाब देना मैं आराम से जवाब दूं, तो आई एम नॉट अ गधा. तो बाद में उन्होंने रियलाइज किया टू हैव दिस पावर आई हैव टू swallow द बिटर पिल एंड रियलाइज दैट आई हैव चूजन टू बी मिजरेबल. ये मैंने चूज किया था, ये समझना पड़ेगा मेरे को. तो एट दैट मोमेंट आई स्टूड अप. इसलिए वो खड़ी हो गई. I felt as though I was being let out of San Quentin. I went to yell to the whole world, I am free. I am let out of prison. No longer I am going to be controlled by treatment of some other person. और जब सुना है उन्होंने समझा, तब वो खड़ी हुई और बोलता है ऐसा लगता है जैसे मुझे वो सेंट क्विंटन से बाहर निकल गया है और जो उससे चिल्ला रही हूँ कि मैं फ्री हूँ. आई एम अ फ्री बर्ड. आई एम आउट ऑफ द प्रिजन. जब उसको रियलाइज हुआ कि ये मिजरेबल थी नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया था. I could have accepted not to be miserable. So it's not just what happened to us. हमारे साथ क्या घटता वो जरूरी है. हम किस तरह से उसको जवाब देते हैं. How do we respond to that thing? जो भी हुआ वो हमको ज्यादा हर्ट करता है. Of course, things can hurt physically or economically and can cause sorrow, but our character, our basic identity does not have to be hurt at all.
In fact, our most difficult experience become the crucibles that forge our character and develop the internal powers. In fact, our most difficult experience होता है हमारा become crucible, वो crucible बन जाता है that forge our जो character बनाता है झूठा character and develop the internal power. अंदर power करता है तैयार the freedom to handle the freedom है handle difficult circumstances in the future and to inspire others and to do as well. तो ये हमको freedom देता है to handle difficult circumstances in the future and also to help others समझने में. तो फ्रैंकल यहाँ से पढ़ना है. फ्रैंकल is one of many who have been able to develop the personal freedom in difficult circumstances to lift and inspire others. The autobiography of Vietnam prisoner of war provide additional persuasive testimony of the transforming power of such personal freedom or the prisoners both there are sorry क्या किया Vietnam of war additional persuasive testimony of the transforming power of such personal freedom and effect of the responsible use of that freedom on the prison culture. एक prison में था एक बहुत अत्याचार था और इसने अपने दिमाग को इतना काबू कर लिया. He was so responsible for his feelings. इसके अपने values थे. तो उसने क्या किया use that freedom of the prison culture and on the prisoners both then and now. सब पे उसने इफेक्ट किया सबसे बात की सबके ऊपर इफेक्ट किया और खास कर खुद के ऊपर. तो ये जो होता है अपने माइंड को कंट्रोल करना और चूज करना वो अपने हाथ में होता है. ये तो वॉर का बंदा था जहां उनको इम्प्रिजन किया गया था उनके साथ बहुत जाती की गई फिर भी अपने आप को इन्होंने कंट्रोल किया. ये बेटा गो है वी हैव ऑल नॉन इंडिविजुअल We have all known individuals in very difficult circumstances, perhaps we with a terminal illness or a severe physical handicap handicap who maintain magnificent emotional strength. How inspired we are by their integrity. Nothing has a greater, longer lasting impression upon another person than the awareness that someone has transcended suffering. and He transcended circumstances. Yes. has transcended Transcended. Transcended circumstances. And is embodying and expressing a value that inspires and ennobles and lift life. हाँ ये क्या लिखते हैं अभी we have all known in very individual in very difficult circumstances. हम ऐसे आदमी को पहचानते हैं जो एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में है उनका हैंडीकैप है उनको ऐसा इलनेस है कि वो हो जाएगा उनको म्यूट करना म्यूट कोई बोल रहा है. तो ऐसे लोग को हम पहचानते हैं जो टर्मिनल इलनेस है जो मरने वाले हैं बहुत तकलीफ है सीवियरली हैंडीकैप है मगर उन्होंने अपना इमोशनल स्ट्रेंथ को मेंटेन किया हुआ है. इतनी ताकत है अंदर से कि ये मेंटेन इमोशनल स्ट्रेंथ. हम उससे इंस्पायर होते हैं बाय देयर इंटेग्रिटी. नथिंग एल्स हैज ग्रेटर एंड लास्टिंग इंप्रेशन अपॉन अनदर पर्सन. ऐसा कोई चीज नहीं है जो दूसरे आदमी ज्यादा एक छाप छोड़ जाता है जिससे कि वो चीज क्या है अवेयरनेस दैट समवन हैज ट्रांसेंड सफरिंग. कि एक बंदे ने अपने सफरिंग को ट्रांसेंड मतलब उसके आगे चला गया उस सफरिंग को पीछे छोड़ दिया एंड इज हैप्पी. तो नथिंग इज मोर लास्टिंग. ऐसा कोई छाप नहीं है किसी के ऊपर इससे ज्यादा कोई अच्छी छाप नहीं सकती है कि एक आदमी जो सफर कर रहा है वो सफरिंग को उसने ट्रांसेंड किया और वो खुश हुआ सफरिंग को भूल के. ट्रांसेंड सर्कमस्टेंस कभी कभी सर्कमस्टेंस होता है ऐसे उसको उसने ट्रांसेंड किया मतलब उसके आगे जाना. ट्रांसेंड इज गोइंग बियॉन्ड एंड हिज एम्बॉडी उसने अपने एम्बॉडी किया मतलब अपने बॉडी में ढाल दिया उसने एंड एक्सप्रेसिंग वैल्यू. इतना होने के बाद भी वो वैल्यू एक्सप्रेस कर रहा है दैट इंस्पायर्स एंड नोबल आदमी को नोबल बनाता है एंड लिव्स लाइफ. ऐसा आदमी बाकी लोग को इंस्पायर करता है
उनको नोबल बनाता है और उनकी लाइफ को लिफ्ट करता है. So when you see this type of people and see how strong they are, you realize कि हमारा को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए. We have to come out of being reacting. We have to हमारे इमोशंस को हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमारे इमोशंस को, and we have to be like that. Yes, beta, go ahead. One of the most inspiring. One of the most inspiring times Sandhya and I have over had took place over a 4-5 year period with a dear friend of ours named Carol, who had a wasting cancer disease. She had been one of the Sandhya's biggest Best friends, friend, and they had been best friends best for friend over for 25 years. 25 years. When Carol was in very last stages of the disease, Sandra spent time at her beside helping her No, no, write bro. her हाँ, personal history. She returned from those protracted and difficult protracted, protracted, हाँ बेटा, protracted seasons, and difficult protected sessions. and difficult seasons, almost transfixed by Admiration admiration for her for friend's friends, courage, courage and her desire to write special messages to be given to her children at children, different stages different stage in the lives. in their अब life. देखो एक इधर को रुकते हैं थोड़ा. वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग बोलता है टाइम्स था, उनकी वाइफ का नाम है सैंड्रा. दो टाइम सैंड्रा एंड आई हैड एवर टुक प्लेस, जो हमारे साथ घटा है, एक गजब की बात थी. और 4 year पीरियड विद अ डियर फ्रेंड, उनकी एक खास दोस्त थी सैंड्रा की, उसका नाम था केरोल. वो वाज हर ब्राइडमेड. जब वो लोग शादी करते हैं ना, तो एक जो लड़की थी, उसकी ब्राइडमेड होती है, वो खास फ्रेंड होती है. एंड दे हैड बीन फ्रेंड्स फॉर 25 years. अब उसको कैंसर हो गया है और वो सैंड्रा उसके साथ रहती है. शी विथ हर एट हर बेड साइड हेल्पिंग हर राइट हर पर्सनल हिस्ट्री. उसको अपना बारे में लिखना है. लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज में बहुत तकलीफ होती है कैंसर में, और वो हिस्ट्री लिखवा रही है. She returned from those protracted and difficult sessions almost transfixed by admiration for a friend's courage. मतलब प्रोटेक्टेड मतलब ऐसा पूरा बेंड हो जाना. तो वहां से वो वापस आई घर पे. वो आती है जब भी वो बैठती है, जब घर पे आती थी, सी वो रिटर्न प्रोटेक्टेड, मतलब पूरा दिमाग खराब हो गया एकदम. वो अजीब बात लगी इसको, और ये डिफिकल्ट सेशन था उसके लिए. सी वो ट्रांसफर, मतलब उधर ही वो एकदम इतनी एडमायर करी थी औरत को कि क्या बंदी है. इतना कुछ होने के बाद भी वो मैसेज भेज रही है, वो हिस्ट्री लिख रही है, अपने बच्चों को मैसेज दे रही है. और बच्चों को मैसेज कैसे दिया, मतलब सेंटर का बोला कि 5 साल का होगा तो ये बोलना, 10 साल का होगा तो ये बोलना, जो भी एज वाइज उसने मैसेज दिए. इतनी तकलीफ में होने के बाद भी वो औरत इतना कुछ कर सकती है. तो ये सेंड्रा वाज जस्ट एडमायरिंग हर लाइक एनीथिंग. शी वाज ट्रांसफिक्स्ड, मतलब एकदम दिमाग उधर फिक्स हो गया कि क्या है, क्या ताकत है इसकी. तो इतनी वो जब देखे उसको मालूम पड़ा कि ऐसा भी हो सकता है आदमी. यस बेटा, लेट्स गो. Carol Carol would take a little pain killing medication as इट्स possible, पॉसिबल. so that she had full access to her mental and emotional faculties. Then she would whisper into a tape recorder or to Sandra directly as she took notes. Carol was so proactive, so brave, and so concerned about others that she became an enormous source of inspiration to many people around her. अराउंड I हर. will I will never forget the experience of looking deeply into Carol's eye the day before she passed away and sensing out that deep, hollowed agony, a person of tremendous intrinsic worth. I could see in her eyes a life of character, contribution, and services, as well as love and concern and appreciation. एप्रिसिएशन. तो बोलते कलर वो पेन किलर भी कम लेती थी, जितना हो गया मिनिमम लेती थी, ताकि उसका दिमाग काम करे, इमोशनल फैकल्टीज काम करे, एंड शी कैन से व्हाट शी वांट टू से. कभी वो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करती थी, कभी सेंड्रा बाजू में बैठी तो उसको काम में बोलती थी और वो नोट्स बनाती थी. शी वांटेड टू राइट हर हिस्ट्री और उनको मैसेज भी देना था बच्चों को.
वो इतनी प्रोएक्टिव थी और इतनी ब्रेव थी एंड कंसर्न फॉर अदर्स, उनको दूसरों की चिंता थी, उनके बच्चों की या जो भी है साथ में. शी बिकेम एन इनॉर्मस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मेनी पीपल अराउंड हर. उसके इर्द गिर्द जो आदमी थे सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गई कि ऐसा आदमी ब्रेव होना चाहिए. ये बोलती है आई कैन नेवर फॉरगेट द एक्सपीरियंस ऑफ लुकिंग डीपली इनटू कैरोल्स आई. उसकी आंखों में से देखा द डे बिफोर शी पास्ड अवे and sending out of the deep hollowed agony a person of tremendous instinct worth. उसकी जबरदस्त वर्थ, इंट्रिंसिक मतलब अंदर की जो वैल्यू होती है ना, इंटरनल, वो बहुत सारी इसकी वर्थ थी, बहुत स्ट्रांग आई थी. और उसके आंखों में देखा वो होलो आई जिसमें एगोनी, जो दुख ही दुख भरा हुआ है, तकलीफ भरी हुई, पेन भरा है, दुख नहीं. आई कुड सी इन आईज अ लाइफ ऑफ कैरेक्टर. कैरेक्टर क्या होता है इसकी आंखों में दिख रहा था मेरे को. अ लाइफ ऑफ कैरेक्टर, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस as well as love and concern and appreciation. ये सब उसकी आंखों में दिख रहा था उनको. इतनी मजबूत वो थी. यस सर. हेलो मंजी जी. सॉरी, मैं म्यूट पे पढ़ रहा था. Many हाँ हाँ times, ओके. many times over the years, I have asked group of people how many have ever experienced being in the presence of a dying individual who had a magnificent attitude and communicated love and compassion and served in unmatchable ways to the very end. Usually, about one-fourth of the audience respond in the affirmative. I then asked how many of them will never forget these individuals. How many were transformed, at least temporarily, by the inspiration of such courage, and were deeply moved and motivated to more noble acts of science, service, and सर्विस. compassion. The same people respond again almost inevitably. एक Uh, मिनट एक मिनट एक yeah, मिनट रुकिए. मेनी टाइम्स ओवर द ईयर, सालों में, मेनी टाइम ओवर द ईयर, बहुत सारे ईयर्स गए. शी टू आस्क ग्रुप ऑफ पीपल कि आप किस किस को इससे फर्क पड़ा, समझे कुछ इसमें कि आपके एटीट्यूड में फर्क आया. Attitude and communicated love and compassion and served in unmatched ways to very end. वो क्या पूछती है? How many have ever experienced being in presence? ऐसे कौन आदमी है, ऐसी कोई लेडी या आदमी जो मर रहा था और इतना उसमें लव था, इतना कंपेशन सब था, और आपने देखा हुआ है अप टू एंड. यूजुअली अबाउट वन फोर्थ ऑफ द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड इन द. एक चौथाई आदमी ने बोला हमने देखा है. समझो 10 आदमी तो 3 आदमी ने बोला हाँ देखा है. Then I then ask how many of them will never forget this individual. How many were transformed, at least temporarily? Temporary transform हुआ कोई by the inspiration of such courage and very deeply moved and motivated to more noble act. इससे मूव हो गए, उन्होंने और नोबल एक्ट किया, और सर्विस किया, और कंपेशन किया. The same people respond again. जो वन फोर्थ बोला था हमने देखा है, उन्होंने वापस रिस्पॉन्ड किया, हमें ट्रांसफॉर्मेशन आया, we did something better. Almost inevitably सबने बोला उठे. Yes sir. Victor Frankl. मंजी म्यूट है क्या? हाँ जी, हाँ जी. विक्टर फ्रैंकल. Viktor Frankl suggests that there are three central values in life: experiential, or एक्सपीरियंशियल. that that happens to us; the creative, or that which bring we into bring into existence existence; and the and attitudinal. attitudinal, or our response is difficult. Our Circumstances such as response in terminal difficult illness. circumstances, such as terminal illness. Ah, My own experience with people confirms that the point Frankel makes, that the highest of the three values is attitudinal. In this paradigm or reframing sense, in other words, what matters most is how we respond to what we experience in life. Difficult circumstances often create paradigm shifts, whole new frames of reference by which people see the world and themselves and others in it, and what life is asking of them. The large perspective reflects the attitudinal values that attitudinal live value that live and and inspire us inspire all. all. तो 3 प्रकार से वैल्यूज बनती है. एक्सपीरियंशियल मतलब एक्सपीरियंस करते हैं हम. हमारा तो क्या हुआ,
सॉरी वेरी सॉरी, द क्रिएटिव वन, जो हम बनाते हैं, और तीसरा है एटीट्यूड से बनती है, जो हमारा एटीट्यूड होता है रिस्पॉन्ड करने का, एटीट्यूड ऑफ आवर रिस्पॉन्स इन ए डिफिकल्ट, जब डिफिकल्ट सेकंड होती है, जब हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारा एटीट्यूड, उससे बनता है वैल्यूज। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो फ्रैंकल बोलते हैं कि जो वैल्यूज इज एटीट्यूडियल, तो इन द पैराडाइम ऑफ रिफ्रेमिंग सेंस, जो हमारा बिलीफ है रिफ्रेमिंग द सेंस, इन अदर व्हाट मैटर्स मोस्ट इज हाउ वी रिस्पॉन्ड, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सबसे महत्व का है। टू व्हाट वी एक्सपीरियंस, हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उससे ज्यादा इंपोर्टेंट हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट। तो जो फ्रैंकल बोलते बात सही है, ये तीन में से एटीट्यूडल वैल्यूज सबसे महत्व का है। एटीट्यूड बनता है किससे, हाउ यू रिस्पॉन्ड। तो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस ऑफन क्रिएट पैराडाइम शिफ्ट, ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन वो हमारे अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट लाती है, हमारा बिलीफ को तहस महस कर देते हैं, जो नए बिलीफ को, और नए बिलीफ लेके आती है। तो होल न्यू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ये जो न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच पीपल सी द वर्ल्ड, आदमी को देखने के नजरिया होता है ना, तो वो नजरिया कैसे होता है, रेफरेंस होता है। तो ये न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया उनका, नया चश्मा लग गया उनके आंख पे, एंड द वे दे सी द वर्ल्ड एंड देमसेल्फ एंड अदर इन इट, उसमें से वो अपने आप को देखते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, बाकी लोग को देखता है। एंड व्हाट लाइफ इज आस्किंग ऑफ देम, वो देखता है कि लाइफ मेरे से क्या मांग रही है। देयर लार्जर पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूडल वैल्यू दैट लिफ्ट एंड इंस्पायर अस ऑल। तो उनका जो मेन पर्सपेक्टिव होता है ना, जो परसेप्शन या जो बिलीव होता है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, उसका एटीट्यूडल वैल्यूज, जो हम सबको लिफ्ट करता है, इंस्पायर करता है। तो मेन क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, एटीट्यूडल वैल्यू, हमारा एटीट्यूड क्या है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये छोटा है, एक पूरा कर लेते हैं आज, इतना छोटा नहीं है, पर हो जाएगा। टेकिंग द इनिशिएटिव, 8 बज गया है, क्या करें। कर लेते हैं, 5 मिनट में खत्म। तो ज्यादा फास्ट पढ़ना, हाँ टेकिंग जी, द हाँ जी, हाँ जी। इनिशिएटिव। हाँ, Our basic nature is to act and not to be acted upon, as well as well as enabling us to choose our response to be in particular particular circumstances. circumstances. This empowers us to create circumstances. Taking initiative does not mean being pushy, obnoxious, or aggressive. It does mean recognizing our responsibilities to make things happen. Over the years, I have frequently counseled people who wanted better jobs to show more initiatives, to take interest and aptitude tests, to study the industry, even the specific problems the organizations they are interested in are facing, and then to develop an effective representation showing Showing how how their the abilities can. abilities can help solve the organization's problems. It is called solution selling and a key and is a key paradigm in Paradigm business in success. business success. हाँ, तो our basic nature is to act and not to be acted upon। हम हमारा नेचर कैसे है, एक्ट करते हैं, not to be acted upon, हमारे पे एक्ट नहीं होना चाहिए, we will act as an enabling us to choose our response particular to the particular situation। जो एक circumstance है, उसको देख के हम एक रिस्पॉन्स तैयार करते हैं, चूज करते हैं। दिस वो क्या करता है, empower us to create circumstances। उससे क्या होता है, when we respond, हम circumstances create करते हैं, when we react, circumstances get acted on us, but when we act and we take responsibility and we respond, हम circumstances पैदा करते हैं। जो टेकिंग इनिशिएटिव डज नॉट मीन बीइंग पुशी, इनिशिएटिव लेना मतलब किसी को पुश करना ऑब्नॉक्सियस और एग्रेसिवली, वो नहीं होता है। इट डज मीन रिकॉग्नाइजिंग, हमको अपनी जवाबदारी समझ के काम करना है, और चीज को करना है, काम होना मिलता है बराबर। तो ओवर द ईयर मैंने बहुत सारे लोगों को काउंसिल किया है, जिसको अच्छी जॉब चाहिए थी, तो उनको अपना इनिशिएटिव दिखाना चाहिए, उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट में और सब में, उनको स्टडी करना है वो इंडस्ट्री जिसमें काम करना है, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम का क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या प्रॉब्लम है, वो स्टडी करना है, दैट व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन आर फेसिंग। अरे प्रॉब्लम्स, अरे सॉरी, टू स्टडी द इंडस्ट्री, इवन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम द ऑर्गेनाइजेशन दे आर इंटरेस्टेड इन आर फेसिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंटरेस्ट है, वो जो फेस करी प्रॉब्लम, उसको भी आप पढ़ो, समझो, एंड डेवलप करिए आप अंदर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन शोइंग हाउ देयर एबिलिटीज कैन हेल्प सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेलिंग।
मतलब जब आदमी ये समझ के आता है, एक जिसको जॉब मांगता है वो पूरा हिस्ट्री पढ़ लेता है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी तकलीफ क्या है वो पढ़ लेता है और उसमें प्रेजेंटेशन बनाता है, प्रेजेंटेशन इस तकलीफ को मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा। तो क्या करे, अपने आप को बेच रहा है। व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? चली एक सॉल्यूशन दिया तो वो आदमी ने इसको रख लिया। यस सर, द रिस्पॉन्स इज The यूजुअली response is usually agreement. Most people can see how powerfully such an approach would affect their opportunities for employment or advancement, but many of them fail to take the necessary steps, the initiative to make it happen. I don't know where to go to take the interest and aptitude tests. How do I study industry and organization problems? No one wants to help me. I don't have any idea how to make an effective presentation. Many people wait for something to happen or someone to take care of them. But people who end up with the good jobs are the proactive ones who are solutions to problems, not problems themselves, who sees the initiative to do whatever is necessary, consistent and correct principles to get the job done. Whenever someone in our family, even one of the younger children, takes an irresponsible position and waits for someone else to make things happen or provide a solution, we tell them, use your R and I. R means resourcefulness and I as an initiative. In इनिशिएटिव। fact, often before we can say it, they answer their own complaints. I know, use my R and I, resourcefulness and initiative. Holding इनिशिएटिव people to the responsible course is not demeaning, it is affirming. Proactivity is a part of human nature, and although the proactive muscles may be dormant, they are there. By respecting the proactive nature of other people, we provide them with at least one clear, undistorted डिस्टोर्टेड reflection रिफ्लेक्शन from the फ्रॉम द social सोशल mirror. मिरर। हाँ, the response is usually agreement. Most people see how powerfully such an approach would affect their opportunity for employment or advancement. Response क्या होता है? It's an agreement. और बहुत लोग देखते हैं how powerfully such an approach would affect their opportunity. But many of them fail. वो करना ही नहीं चाहते। वो पूछते कैसे करूं, एप्टीट्यूड कहाँ से दूं, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से पढ़ूं, मैं उसका तकलीफ को, मैं प्रेजेंटेशन कहाँ से बनाऊं प्रेजेंटेशन। तो बहुत सारे आदमी क्या होते हैं, दे आर वेटिंग, कुछ होगा, अपने आप आएगा, कोई मेहरबानी होगी, कोई मेरा परवाह करेगा। मगर जिस आदमी को जॉब लगती है वो आदमी होता है प्रोएक्टिव। जिसको अच्छी जॉब मिलती है, जो चाहे वो जॉब मिल जाती है, ही इज ऑलवेज प्रोएक्टिव। वो कुछ करता है, उसके लिए वो जॉब आती है उसके पास, ही अट्रैक्ट द जॉब। उनका सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का। दे आर नॉट बिजी द प्रॉब्लम्स। वो खुद प्रॉब्लम नहीं है, पर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो लिखा है हु सीज द इनिशिएटिव टू डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। वो सीज पकड़ लेते हैं एक इनिशिएटिव टू डू व्हाट इज नेसेसरी, कंसिस्टेंट विद करेक्ट प्रिंसिपल टू गेट द जॉब डन। वो क्या करते हैं, वो इनिशिएटिव को खींच लेते हैं अपने पास, एक चांस मिला अपने को, और वो नेसेसरी काम करते हैं एंड फाइंड द सॉल्यूशन। तो वेन एवर समवन इन आवर फैमिली, जो हमारे फैमिली कोई आदमी बोलता है, whenever someone in your family, even one of the younger children takes an irresponsible position, जब वो आदमी irresponsible बनता है and wait for someone else to make things happen or provide solution, तो हम उनको क्या बोलते हैं, use your R and I, आपका खुद का रिसोर्स वापरो और इनिशिएटिव वापरो, because you have been irresponsible। रिस्पॉन्स आदमी कोई भी सपोर्ट करता है। तो in fact often before we can say it, they answer their own complaints, I know, use my R and I। तो बोलते हमारे इधर एक रिवाज बना दिया हमने कि अपना रिसोर्स वापरो। पर ये बात क्या है, when the person is proactive, we get lot of success। Yes sir, holding people Holding people to the responsible course is not demeaning it, it is affirming. Proactivity is part of human nature, and although the proactivity muscle may be dormant, they are there. By respecting the proactive nature of people, we provide them with at least one clear, undistorted reflection from the social mirror. Of course, the maturity level of the individual has to be taken into account. We can't expect high creative
cooperation from those who are deep into emotional dependence. But we can at least affirm our basic nature and create an atmosphere where people can seize opportunities and solve problems in an increasingly self-reliant way. हाँ, तो होल्डिंग पीपल रिस्पॉन्सिबल कोर्स इज नॉट डिमिनिंग, हमको डिमिन नहीं करे, हमको नीचे नहीं गिरा रहे जब हम उसको बोलते हैं तुम रिस्पॉन्सिबल हो, वे एफर्ट नहीं, हम उसको एफर्मेशन कर रहे हैं कि भाई प्रोएक्टिव इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर और आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो हम रिस्पेक्ट करते हैं इसके प्रोएक्टिव नेचर को, जो हर एक में होता है, उसको बाहर लाना पड़ता है। वी प्रोवाइड देम विद अ क्लियर अनडिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम सोशल मिरर। ये जो सोशल मिरर हमने बात की थी, उसमें से हम ये इसको क्लियर पिक्चर दिखा रहे हैं कि भाई प्रोडक्टिव बन जाओ, कुछ करो लाइफ में, स्टार्ट डूइंग समथिंग, टेक इनिशिएटिव। हमको मैच्योरिटी लेवल भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बहुत डिप्रेस है उसको हम बोल दे कुछ करने को, जो आदमी मेंटली स्टेबल नहीं है वैसा भी नहीं करते। बट वी कैन एटलीस्ट एफर्म देयर बेसिक नेचर, उनका जो बेसिक नेचर है उसको बोल सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं उसको बोलने का, ये करो, आप खुद चालू करो। वी कैन एटलीस्ट क्रिएट एटमोस्फियर वेयर पीपल कैन सीज ऑपोजिट, थैंक यू सर, बट वी कैन एटलीस्ट एफर्म देयर बेसिक नेचर, उसको कर सकते हैं एंड क्रिएट ऐसा एटमोस्फियर बनाते हैं वेयर पीपल कैन सीज द अपॉर्चुनिटी को लेंगे, वो छीनेंगे एंड सोल्व प्रॉब्लम। क्या करेंगे? वे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे इन इंक्रीजिंग सेल्फ रिलायंट वे, खुद अपने आप से वो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो हम उनको सबको मजबूत कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं आप करो, टेक स्टेप, बी प्रोएक्टिव, उनको थोड़ा सा धक्का देते हैं, पुश करते हैं थोड़ा सा, तो हम उसकी मजाक नहीं कर रहे। वी आर मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पेक्टिंग दैट नेचर, बेसिक नेचर है आदमी का कि वो आदमी प्रोडक्टिव हो सकता है। तो वी आर डूइंग दैट। ये सोशल मीडिया में हमने देखा ना, तो 3 प्रकार के डिटरमिनेंट है आपका एक्सपीरियंस, मतलब जेनेटिकल, साइकिक एंड एनवायरमेंट। उसमें से हम उनको रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि भाई आप खुद करिए कुछ, डोंट सिट लाइक दैट। तो इट इज बेसिकली वी आर मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल, इसका उनका फायदा होगा तो उनको करना जरूरी है। तो आपको भी अपने घर में आदमी को बोलना, जैसे आपने आज बोला मंजित जी अपने बेटे को पढ़ने को, दैट्स अ गुड थिंग। भले उसने इतना ही पढ़ा, पर कुछ शुरू तो किया उसने। अभी ये बहुत छोटा है, डिपेंड ऑन यू, यू कैन नॉट फोर्स हिम टू डू एवरीथिंग, पर आपने एक आदत डाली, बस थोड़ी सी छोटी सी शुरुआत हुई। इसी तरह हमको कोई आदमी, बड़ा आदमी है, उसको हमको बोलना है आप प्रोएक्टिव बनिए, यू टेक द इनिशिएटिव, यू स्टार्ट, आपको जो चाहिए कम शुरुआत तो करो। केवल हमको बोलना चाहिए, उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, किसी को हम डिमेंड नहीं कर रहे हैं, हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ओके, तो यहीं पर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर, एक्ट और टू बी एक्टेड अपॉन। ओके, सर ये पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर कहाँ मिलेगा? पेज नंबर क्यों दिखाता नहीं पेज में? अरे मैं कहाँ देख रहा हूँ पेज नंबर? 86। हाँ, ओके, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी, Thank you, sir. Thank you. थैंक यू वंस, थैंक यू वेरी मच, Sir, have a लव nice यू बेटा, day. हैव अ नाइस डे।